We are live, we are live, we are live. We're live. Yeah. Are you Finally. sure we are live this time? I'm never Yeah. sure actually. Because after you take care of everything, there is good old fashioned malfunction also, no? Which you discount. ये भी तो होता ही है बेंच। मैं इतना बड़ा बड़ा बात किया और साला गया ही नहीं उसके अंदर बेंच। मैं अरे पीछे से वाह 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 कर रहा हूँ, वो भी वो भी रिकॉर्ड पे नहीं आया, बताओ। वो भी नहीं आया बेंच। एक सुपर चैट भी चला गया। आई एम सॉरी, आई थिंक ये तो सौरभ थे जिन्होंने स्विस फ्रैंक में भेजा सुपर चैट। तो स्विट्जरलैंड को तो ना नहीं बोल सकते है ना। तो उनका ओके। क्वेश्चन था, व्हेन यू सी पीपल लाइक बिल हिक्स, लाइक व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन देम एज एन आर्टिस्ट, बिकॉज एज अ फैन आई लव व्हाट दे डू, but as an artist what do you make of it? So Bill Hicks, if you studied his life story, also the brilliant man obviously, and the comedy is great, but again, like all great art in his time, he was not recognized at all. like America, he was practically a nobody. If you see his own specials, he is bombing in his own special because लोगों को समझ नहीं रहा भाई क्या बात कर रहा है. But it was one for the ages. uh, what is to be noted about people like this is that they stay true to their beliefs despite all the price that they have to pay. The price includes not being successful financially, socially, in popular culture, whatever it is, because their belief is so strong that that is of more value than buying one more flat or one more sneakers. And also knowing throughout your life that till your dying day you won't be understood as much as the DC comics. So I identify with that to a large extent. And why just stand up in any art form? That is how it is. Because the masses will always be ignorant. So very often, success is when your personality matches the average of the market. And a good artist, by definition, will never be average. So that is what you have to appreciate about them. That the grit, I would say, and the courage they had not to stay with what they believed in despite all the odds, and that is commendable. There was one more super chat. If you notice, Jamie, जिसने मुझे 100 रुपए भेजे कि ये आज का वाईफाई का बिल भर दे, भोसड़ी की तरह स्ट्रीम नहीं चल रहा है. What was the name of the person? I'm sorry if I forgot. If you're still here, can just let us know, because that stream अटक ही गया. तो जितना मुझे याद रहा उतना मैंने याद रखा उसमें से. I saw that Pushpak was there, and think Shweta was there for a while. I'm not sure. Rest of you, thank you for being here and being so patient. As you know, Guruji is very challenged technologically. बस उम्र का तकाजा है, क्या कर सकते हैं. बट वी आर हियर नाउ. मैं घर पे ही बैठा हूँ चड्डी पहन के, तो आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर. We'll do a longer live to compensate if that helps. But are we now live? I'm never fucking sure. Is it working? या ओके, तो अगर आप आ गए हो तो धन्यवाद, और शुरू करते हैं आज का सत्संग CFBR के साथ. प्लीज लाइक कीजिए ये स्ट्रीम को, क्योंकि वो स्ट्रीम हमको डिलीट करना पड़ा. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. आई हैड डेटा, आई हैड एवरीथिंग, बट एनीवे. So please do like. पीएफआर। Yes, CFBR, like the fucking stream so that we begin. पहले जो हमारे इंटर्न हैं श्री जेमी जी, वो होने नहीं वाले थे साथ में, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक नया कॉन्सेप्ट आया है मार्केट में, वर्क लाइफ बैलेंस, तो मुझे वो करना है आज. तो मतलब ठीक है, मैं खुद से ट्राई करता हूँ. पर कैसा है कि सब ये कहाँ से एलिगेशन आ रहे हैं? यू ओनली टोल्ड मी कि यार मैं 9 बजे तक घर पे आता हूँ, ये सब होता नहीं है मेरे से, मेरा अभी लाइफ है, मेरे को बैडमिंटन खेलने का है. बोले, ठीक है अभी होगा कुछ लोकल कल्चर, पता नहीं अपने को. तो जेमी, एज यू गाइस नो, इज अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन बट नॉट इन द सेम सिटी. तो वो सिटी का होगा कुछ, बैडमिंटन लोग खेलते होंगे, अभी भी पता नहीं. और मे बी इट्स अ कोड वर्ड इन डेटिंग. आई एम नॉट श्योर एनी मोर. अरे पर क्या, ये यंगस्टर लोग को सब कुछ करने का, लाइफस्टाइल भी चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस भी चाहिए इनको. तो इनको आईफोन भी लेना है, इनको चीज केक भी चाहिए, फिर बॉडी भी बनाने का, सब कैसा होगा साथ में, मुश्किल है. बट लोग करके ही मानते हैं, कोई बात नहीं. तो एक बार देख लें कौन कौन आया है यहाँ पे साथ में. अरे 100 लोग आ गए, क्या बात है. सौरभ, जिनका आया था सुपर चैट, वो शायद नहीं है यहाँ पे, बट आई आई होप यू सी इट व्हेन यू फाइनली सी द स्ट्रीम. टू आंसर योर क्वेश्चन, ऑलवेज ग्रेट टू meet a fellow fan of Bill Hicks. Uh, I think he also mentioned Rodney Dangerfield, is it? No, he mentioned नो नो, फ्रैंकी बॉय। Frankie Boyle, the British comic, of course, almost in the same league, I would say, as Bill Hicks. Also, one more thing, Bill Hicks never did brand work, so that's there. हाँ,
क्या In ही fact, कर, he no अरे he had ब्रांड का भी सीन नहीं होता था ना। नहीं था ना, नहीं, not for comics but for other celebrities. He had an entire set about it, how all your heroes are all sold out, no. And I guess he used to wear the Nike ka no ye earring at that time. हाँ And he said, you know what, artist doing a brand work is like you giving a blowjob to the devil. And he used to do this act where he would swallow the entire mic and make sounds, what it would sound like if you blew the devil. अरे 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 अरे। Wait, Sony, other question. As per the Hegelian dialectic, क्या बात है, पढ़ा लिखा लोग आ गया stream पे. Once the pendulum of Indian society swings harder to the left, how will society look like? And how can that swing be brought about? Wait, Sony, great question. I think it had already swung left, and that's why it is now going so right. No, we did not realize it when it was swinging left. Now we realize that in the third world countries, we were actually the best. After the white people left, all the other countries they collapsed. They some of them did not even try democracy. At least we tried, and it was good for a while. Imagine how good it was. You could criticize people and politicians, especially just 10 years back. Now you can't. Imagine how great India was if there was a rape that happened. People could actually say that it is bad. Now you can't even say that rape is bad. So I think pendulum has swung. It was left. We did not know it. No, that's what it is. You only miss people once they're gone. Dr. Ujjwal Sethi super chat has come in. Namaskar. So good hearing a voice of sanity, cynicism, and satire, and more like the word of reason. Love your work. Loved meeting you in Delhi once. God bless. Thank you, man. Thank you. I'm trying my best. Difficult to even know whether you're insane or the world is in these days, but so far, I think I'm holding on. आई थिंक आई गेट टू ऑल द क्वेश्चंस बट क्योंकि हमने बड़ा चढ़ा के इसका लिखा है टाइटल, जो हमारा आज का फ्लेवर है वो है हिस्ट्री. इनफैक्ट सिर्फ आज का ही क्यों कहें, फ्लेवर ऑफ द सीजन ही हिस्ट्री है. एंड आई फील इंक्रीजिंगली दैट हिस्ट्री इज नॉट व्हाट यू रीड इन बुक्स, नो, और व्हाट यू talk about and discuss. History is right now, we are living it, isn't not? What a time to be alive. Kings are building monuments to satisfy the insatiable egos. People with flags are fighting each other because the color of the flag happens to be different. Riots are being celebrated, and astrologers are still in business. What a time to be alive. Perhaps it has always been this way. The same Maya, the same drama, the same trauma. Only the costumes changed. The kings used to wear crowns and robes. Now they wear humble kurtas. Peasants used to wear kurtas or nothing at all. Now they wear Zara, but they are depressed. What a time to be alive. Is this not history in the making? It's all madness. If you're aware, if you're not, if you're ignorant, it is just life. Sometimes I feel extreme sanity and extreme insanity almost seem like the same thing. Very hard to make out the difference. But then, if you read enough, all the answers are already there. Our original Guru Osho himself says that history records only violence. History does not record silence. It cannot record it. All records are of disturbance. Whenever someone becomes really silent, he disappears from all records. He disappears from history. He is no more a part of the madness. So it should be. And Guruji has himself said in one of his blogs that maybe the real heroes are out there somewhere, just living their life quietly in the mountains, perhaps with no carbon footprint. You will never hear about them because they're not on Instagram, but they are the real heroes, not us, not even me. मैं तो मरवा रहा हूँ यहाँ पे YouTube पे, मेरा लाइव भी नहीं चल रहा है ठीक से बेंचर. So संक्षेप में कहा जाए तो only the assholes feature in history. The nice people, they die without making too much noise. So it's okay to be normal. It's okay to be mediocre. At least you're not evil. With that, I think we should throw the floor open to discussion and to questions. Once again, I apologize for one more wardrobe malfunction that we suffered today. But I think some people are with us. हैं लोग हैं कि नहीं है? कोई देख रहा हाँ है? हाँ, अरे the public are more interested in
You in know, cheesecake. event of the millennium. अच्छा, इवेंट ऑफ द मिलेनियम, बट जिसके आई बारे में मेरे को पता नहीं था लास्ट में। now you know हाँ 126 people are watching but only 42 have liked the stream. तो ये स्ट्रीम कौन लाइक करेगा? आप ही करोगे ना, तो प्लीज लाइक कीजिए। CFBR के साथ क्वेश्चन लेते हैं। क्या क्या सेल है? आउट कॉमिक वाला बात किया है। अरे मेरा कल था मीटिंग यूट्यूब के साथ, पता है उसने क्या बोला मेरे को? कि बोलता है सिर्फ 17% पीपल हैव सब्सक्राइब टू इट। वो लोग ऐसे ही देख रहे हैं, मुफ्त में तो क्या, मुफ्त में बांट रहे, लेकिन एटलीस्ट सब्सक्राइब करें तो आदमी को मालूम पड़े, थोड़ा प्रोत्साहन हो कि भाई हैं लोग सुनने वाले। और इससे भी पता है बुरा हालत क्या है? कि क्या? ओनली 8% ऑफ द सब्सक्राइबर्स ऑन द चैनल हैव हिट द घंटी। तो व्हेन यू रिलीज अ न्यू वीडियो उनको पहुंचता ही नहीं है हम्म, ईमेल। तो अच्छा। मैं मानता हूँ कि फोन का नोटिफिकेशन ऑफ रखना चाहिए टू लिव अ पीसफुल लाइफ पॉसिबली। बट एटलीस्ट ईमेल में आता है ना कि ये चूते ने कुछ डाला है तो देखो, तो पब्लिक ने वो भी नहीं करा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो बट यूट्यूब ने बोला कि ऐसे कैसे आप ऐसे ही चला रहे हो चैनल, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? एज ए यूट्यूबर आपका धर्म बनता है कि आपको हर 2 मिनट में लोगों को बोलना है लाइक शेयर सब्सक्राइब हिलाओ, ये सब बोलना पड़ता है। मैं नहीं बोलता हूँ, ये बोलना पड़ेगा, पब्लिक को याद दिलाना पड़ेगा। CFBR तो सी एफ बी आर और एक चीज बिफोर वी प्रोसीड, someone already mentioned in the last stream, and thank you for that, that Hyderabad shows this weekend. Finally, Hyderabad. Last time I had to cut my trip short because of an emergency. So fresh violence is happening for the first time in Hyderabad this Friday. Half the tickets are gone already. New comedy club in Madhapur. Good place to perform. It's called the Street Drive-In. Please do come. Saturday, second show in Hyderabad. That show is Notes from the Bunker. It's happening in Taj Begum Pit. And I think they have some cover also for you guys. तो आओ और दारू पियो ताज में और सुनो चुटकुले। दो अलग अलग एरिया हैं, अलग अलग शो हैं, तो आइएगा। क्या लिंक पेस्ट की जाए चैट में जेमी जी? हाँ हाँ, डिस्क्रिप्शन पे ऑलरेडी है भाई। है, ओके। मैं तेरे को एक और लिंक भेज रहा है, वो भी डालना चैट में। आई एम अनाउंसिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम हियर राइट नाउ, अरे, क्योंकि या इंटरनेशनल। हाँ हाँ, लाइव लाइव में ही करना चाहिए। जो पब्लिक वेट किया आपके लिए, आपका वार्डरोब मेल फंक्शन भी देख लिया उनके लिए, तो एक अनाउंसमेंट छोटा, नॉट अ बिग वन बट नॉनदलेस, मैं एक तेरे को व्हाट्सएप किया है। ये लिंक प्लीज पेस्ट की जाए चैट में, एक बार आ जाए तो आई अनाउंस इट। क्या डाल के पेस्ट करूँ? बस लिंक पेस्ट करूँ? हाँ, चैट में डाल दो लिंक। डाल दिया लिंक। हाँ, तो जो देखिए, जो लिंक ट्री आया है उसमें सब शो है इंक्लूडिंग हैदराबाद। और जो अभी लिंक आया है, दिस इज माय शो इन ऑकलैंड in the southern hemisphere in the month of March, in the beginning of March on a Saturday. I think it is 2nd March. It's a great club in Auckland, comedy club, where I'm doing a show. The show is not from the bunker, but if you live there, you've not seen any of my shows. So if you are there or if you know anybody there, please them in Auckland. All NRIs are invited, even the Bucks, because this is a general show. I'm sure you'll enjoy it. So कैजुअल फ्लेक्स, ऐसा नहीं है एफडी तोड़ के जा रहे हैं। पुष्पक पोदार पुनीत, आप भी भारत छोड़ के जा रहे हैं, व्हाट इज दिस? अरे हमको कौन लेके जाएगा अभी ये उम्र में? हम कहाँ नौकरी कर पाएंगे अभी? देखो, लोगों को लगता है कि कमाएंगे डॉलर में तो लाइफ अच्छा बनेगा, पर आप कमाओगे डॉलर में तो आप गवाओगे भी डॉलर में ही ना। तो बड़ी मुश्किल से थोड़ा डिग्निटी से जी पा रहे हैं इंडिया में, तो बाहर तो नहीं जाना अभी। एंड एनीवे, लाइक आई सेड, आई वांट टू गो डाउन विद द शिप। Zay this year, how are you, man? 2nd March is my daughter's birthday. All the best. Arey. If I don't remember, my wishes in advance for you. सम्राट पाटिल has sent a super chat of 500। एक बियर पॉइंट मेरी तरफ से cheers। अरे, धन्यवाद। हम इससे प्रोटीन लस्सी पियेंगे अमूल का, बिकॉज माई टेस्ट हैव चेंज्ड इन लाइफ। ये क्या ब्रांड प्लग इन कर रहे हो आप अभी? अरे अमूल का तो कर सकते हैं, गुज्जू है फिर भी। अरे, हाँ हाँ। Saurav Singh is back from Switzerland. Unpopular opinion. Given what gods mean to Indians, if people truly felt the coming of Lord yesterday, it would have been far massive event. The crowd seemed too little for that. Oh, what a great point. Saurav is referring to the news that was news to you last week, Jimmy. The event of the century. The मिलेनियम। homecoming. The homecoming. No, the homecoming, the marriage that never happened. Uh,
What a great point. He's saying अगर सच में people felt something divine yesterday, you would have felt it, no? तो गवर्नमेंट ने बोला कि सेकंड दिवाली होनी चाहिए, पर क्या दिवाली सरकारी प्रोग्राम नहीं है ना, दिवाली दिवाली होती है ना, वो ऐसे किसी के बोलने से नहीं हो सकती। लोगों ने ट्राई किया, जो बिल्डिंग सेक्रेटरी लोग हैं उन्होंने थोड़ा लाइट वाइट लगाया, थोड़ा आवाज किया, पर ज्यादा नहीं हो पाया। मैं दिल्ली में था, आई वाज क्या इन बोल रहे चांद। हो? हाँ, थोड़ा आवाज। मेरे इधर पब्लिक डीजे वीजे डाल के गणपति विसर्जन स्टाइल नाच रहा था एकदम फुल। नहीं, हम क्या? श्योर बहुत हुआ है, पर देश बहुत बड़ा है ना, अभी 150 करोड़ लोग हैं। अगर सब लोग दिवाली मनाएंगे तो यू वुड हैव फेल्ट इट, नो? बट अगेन दिवाली इज ऑल्सो अबाउट स्पेंडिंग एंड ऑल ऑफ दैट, तो यू कैन रिक्रिएट इट। आई लाइक द आइडिया कि बनाओ त्योहार, बड़ा दिन है, दिया हुआ जला, सब बोला भाई ने, बट थोड़ा लेट हो गया। आई थिंक उनको थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग में, मीटिंग में लेट आइडिया आया किसी को। इफ इफ दे आर टोल्ड 1 मंथ इन एडवांस, तो पब्लिक का यहाँ पे लाइफ चल रहा है, नौकरी करनी है, छुट्टी लेनी है, उसके बीच में अचानक दिवाली आ गया जनवरी में, तो पब्लिक थोड़ा हाँ, हिल अरे जाए, अरे अरे भाई भाई, अरे दिवाली, अरे मेरा सिक लीव बचा नहीं है, क्या करूं मैं? ऐसे लीव भी दिया भाई ने, पर लीव भी थोड़ा लेट हो गया। आई थिंक पहले उनका आइडिया नहीं था, पता नहीं क्या हो गया, तो जो ये स्टेट आईएम में। वालों ने लेट सजेस्ट किया लगता है। हाँ, आई थिंक द थिंक टैंक है उनका, वो लोग, हाँ। उनका थोड़ा पैसा काटना मांगता है इसमें। अरे आपको छुट पता है क्रेजी शिट क्या हुआ उस दिन? हाँ। मैं मैं ऑफिस से जाके आया, ठीक है, और मैंने मैंने संडे पुनीत से बात कर रहा था। संडे पुनीत को बोला मैं कि अरे हमको ऑफिस को छुट्टी नहीं है कल। पुनीत ऑल द कांग्रेस को वोट स्टेट में। Yes, serves you right. But again, we can't disclose what state it is. You can guess, but there are only 3 states of Congress left, so it's not that difficult to guess also. हाँ, बट स्टिल बी स्टेट। तो हाँ तो छुट्टी भी लेट एनीवे। आया, फिर बैंक बंद था। मैं सुना एक बैंक बैंक खुला था 1.5 घंटे के लिए, तो 1.5 घंटे में लंच ब्रेक भी नहीं होता है, तो क्यों ही खुला रखा उतना भी। और एम्स वॉज शट फॉर हाफ अ डे, यू नो। तो हमको लगा यार, गरीब पेशेंट लाइन में खड़े हैं, आप क्या करेगा, तो उनको छुट्टी भी दिया नहीं। वो लोग आया एम्स में, डॉक्टर, और उनको लाइव टेलीकास्ट दिखा जबरदस्ती बिठा के ऑडिटोरियम में। तो ऐसा दिवाली नहीं होता, दिवाली जबरदस्ती नहीं होता, दिवाली तो दिल से आता है, तो आप कर सकते हो। बट एनीवे, I was in Delhi on that auspicious day because I was had a show and then I'm coming back the next day. And I happened to be in Chandni Chowk at that same time. और ज़्यादा था नहीं, लंगर में खाने बट रहे थे, it was good for people I guess. और एक डीजे का ट्रक था, जिसमें वो लोग बजा रहे थे अपना, जो है ना, नया पॉप म्यूजिक, इलेक्ट्रॉनिक डिवोशनल म्यूजिक। और ट्रक के पीछे 5 लोग ही नाच रहे थे, और कमांडो 7 थे। तो मुझे लगा यार, ये तो नहीं चल रहा है। मे बी आई वॉज टू अर्ली टू द पार्टी, आई डोंट नो। But I guess if anybody felt good about it on that one day, at least you should let them have it. It's fine. But good point nonetheless, from Switzerland, from Saurabh Singh. I just one more comment caught my eye here. Some 9-year-old is watching this satsang. कहाँ गया वो? व्हाट? वाह, प्रभाकर शर्मा, गुरुजी, you are smart and looking good. Ayan, 9-year-old audience watching you live. अरे अरे, नमस्ते आयन, नमस्ते। हाउ इज योर स्कूल डूइंग? एग्जाम एग्जाम आती है, ज्यादा ध्यान नहीं देने का, ठीक है? ये पेरेंट लोग बोलते रहते हैं, आराम से करने का, मन का करने का, ठीक है? I think children can watch this. No, there's nothing dangerous that I'm saying. जो घर पे बच्चे देख रहे हैं टीवी पे, वो बहुत ज्यादा डेंजरस है, मैं बोल रहा हूँ उससे। तो हाँ हाँ, बट फिर भी अपना ही लाइव लिमिटेड पे चले जाता है। हाँ, वो तो है। उसने मुझे बोला आप यू कैन आस्क फॉर मैनुअल रिव्यू, तो वही पता नहीं चलता है क्या वर्ड उनको पसंद नहीं आया। एनीवे, पैसों के लिए थोड़ी कर रहे हैं हम ऐसे भी। ओके। अरे उस दिन हाँ प्राण प्रतिष्ठा के दिन हाँ। मैं आया ऑफिस से। हाँ, हाफ डे था कि नहीं, कि नहीं, छुट्टी मिला नहीं ही नहीं नहीं? नहीं, फुल डे फुल डे। फुल डे, ओके। फुल मजदूरी करके आया मैं। हाँ सोचा ऐसा स्ट्रेस रिलीव करने के लिए गुली गुली करता हूँ थोड़ा, है ना? तो आई वाज टॉकिंग ऑन कॉल विद द चीफ केक गर्ल, ठीक है। तो चीज के गर्ल पे क्या नाम? ओके, हाँ तो बात कर रहा हूँ, तो यू नो हाउ अभी गुली गुली हैपेंस कि हाँ शी वाज आस्किंग क्या खाया बाबू ने। तो हाँ। बाबू ने बोला बाबू ने चिकन खाया है ओ नो, आज, चिकन सैलड ऑल ऑफ दैट। ओ नो, प्लीज लीव द कंट्री राइट नाउ। तो उसका रिस्पॉन्स हुआ, हाउ कैन यू ईट चिकन टुडे, तू कैसे चिकन खा सकता है, तू ओ कट्टी जा, नो, ऑल ऑफ दैट।
ये कट्टी सब क्या? हुआ दिस इज ब्रेकअप, इमीडिएट ब्रेकअप। क्या है ये? व्हाट इज सो क्रिंज? आई मीन आई डोंट ईट माई सेल्फ, बट देन व्हाट इज दिस कंपल्शन? Oh, by the way, for the older audience, guli guli is, I mean, whatever. Fuck, I don't even want to explain. Zed said that I listened to your podcast with Sahil Horane at least 5, 6 times. It is so deep and insightful. You want to comment on that podcast? Thank you, Zed, for bringing that up. It's one of my favorite podcasts as well. I'm just sharing the link here for others if you've not seen it yet. Very simply shot one camera from a mobile phone in a cheap hotel room in Pune after my show. But and I had known Sahil for years from the beginning. Sahil was the first comic from Pune. You can check out his YouTube also. He is a good comic from Pune, and he got Chalta Hai over to Pune and did the first ever open mic in Pune. A little bit part of history of stand up in the country, and having known him for years, I never knew so many things about this guy and about his personality, and it all came up in that one discussion. And I still listen to it sometimes, because there was so much in it, like from philosophy to life in general to him talking about when his father passed away. And it was quite nice. 14,000 व्यूज तो इतना ही मार्केट है ये चीज़ों का, बट आप देख लीजिएगा। 200 लोग देख रहे हैं, क्या बात है, धन्यवाद। पर लाइक आपने किया नहीं अभी तक, वेंचर क्या? आई थिंक ये सब छोड़ देना चाहिए ना यार, ये बस लाइव करते रहो। घर का राशन तो दे रहे मोदी जी ना सब लोग को, तो लाइक किया आपके मुंह नहीं से सुन किया। के इतना फनी लगता है ना कि अरे लाइक कर दो भड़वो, ये कर दो, कमेंट कर दो। ऐसा कौन बोलता है? समय बोलता है क्या? नहीं, सब सब लाइव स्ट्रीमर यही बोलते हैं। नहीं नहीं, उतना नहीं गिरना है लाइफ में। पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं ना उनके तो सब ऐसा लौड़ू लोग आ रहे हैं, उनके ऑडियंस भी। ऑडियंस स्ट्रीमर दोनों लौड़ू लोग हैं। तो यही देश है, क्या करें। हाँ। महेश सूरतकर है सेड, कोई जैमी को बंद कराओ, उसका म्यूट बटन है क्या? क्यों इरिटेट कर रहा है? वी आर हियर टू लिसन टू पुनीत ओनली। अरे यार, अरे ये व्हाई यू बीइंग सो मीन डूड? ही इज द वन हु मेकिंग दिस लाइव हैपन. We need a person behind the scenes also. I must tell you that besides the banter, uh, like live like this, no, without somebody else as a sounding board becomes very difficult to, like, talk and perform at. So Jimmy is my sounding board. Also, he's our stand-in for the average Indian voter who is very व्हाट? ignorant. But he like, but he likes cheesecake. क्या कर सकता है? और कोई क्वेश्चन है इसके पहले आगे बढ़े? उसके पहले that we have missed so far. Should I just acknowledge a few people who are here? Zaid has been here for a while. Sar Nan, ये नाम है? Okay. जम जाओगे सर न्यूजीलैंड में? अरे धन्यवाद धन्यवाद। ज़्यादा दिन नहीं, 1 हफ्ते का ही वीज़ा है वैसे भी। पारिजात देवर्षि, यू शुड हैव एन IQ टेस्ट बिफोर सेलिंग टिकट्स, ओनली मेंसा अलाउड। और इधर ऑलरेडी कम लोग आ रहे हैं, IQ टेस्ट किया तो बचेगा मैं, और बचेगा और मे बी वन मोर पर्सन। अरे ऑकलैंड मोदी जी के साथ जा रहे हो क्या? अरे उनका तो अलग है ना, उनका विमान ही खुद का है, उनका पुष्पक विमान। हम तो नॉर्मल जाएंगे कैडल क्लास में। पुष्पक एक पोदार इज हियर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर फॉर ऑल द लाइव्स। श्वेता आई थिंक इज हियर। एक बोधी अक्षय। क्वेश्चन आया है, एक ये बोधी का, हम्म। विच इज सर जी, आपका थॉट्स ऑन सदगुरु फैशन सेंस। अरे he has a proper fashion designer. I think Sabyasachi पहनता है वो, from what I heard. But clearly he has somebody who takes care of his looks, no? But then him, Modi ji, everybody is so conscious, no? Like any influencer. और अच्छा ही पहनते, बुरा नहीं पहनते, but just that you are not used to seeing old men in big positions be that fashionable. ठीक है, आई थिंक अच्छा ही एक तरीके से। बस फिर जब यही आदमी त्याग की बात करता है ना, तो थोड़ा हंसने को आता है। दैट्स ऑल इट। रामनाथन नीलकंठन इज सेड, वेरी साउथ इंडियन नेम विद 4 H इन द नेम्स। नहीं, 2 ही H है। ओके, हाय मैन। जोकोविच पोस्टेड अ स्टोरी विद सदगुरु आफ्टर गोइंग थ्रू टू ऑस्ट्रेलियन ओपन सेमीज। अच्छा, ठीक है यार, कोलैब पोस्ट है, क्या बोल सकते हैं। But Djokovic का बैक स्टोरी ये है कि his parents are staunch believers in the local medicine of Czech Republic। तो उनका होगा ना कोई, उनका आयुर्वेदा टाइप जो, तो उसने रेड रिपब्लिक। जेक रिपब्लिक, Czech नो, जोकोविच
इस समय यूरोपियन कंट्री, करेक्ट मी और इफ आई एम अच्छा, रॉन्ग। चेक रिपब्लिक, अरे। या तो हाँ हाँ वो वहां से है, तो उनका जो होगा ट्रेडिशनल मेडिसिन है उनका कुछ। तो हाँ। भाई ने कभी भी एलोपैथी लिया ही नहीं है लाइफ में, ऐसा है। He had not even taken a single paracetamol ever in his life, and he's obviously one of the fittest people you know on TV at least. हम्म। तो अगर जोकोविच मानता है ये सब सदगुरु का फ्लफी टॉक्स में, तो आई वुडेंट बी सरप्राइज्ड। शिव शिव। शिव शिव नहीं, शंभू शंभू, प्लीज यूज द राइट वर्ड। सूर्य कार्तिक यामुन यमुजाला, इज दैट, आई होप आई एम या। प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली। क्या बोल रहे हैं उन्होंने बोला है कि थॉट्स ऑन रेड कार्पेट एट टीएन बीचेस बाय आदरणीय। आदरणीय। अच्छा, ही दिस आई मिस्ड, उसने रेड कार्पेट एक्चुअल यूज किया क्या बीच के ऊपर? दिस आई एम सॉरी इफ आई मिस्ड इट। कैन समवन एनलाइटन मी ऑन दिस एपिसोड इन द ग्रेट सागा ऑफ द ग्रेट वन? ये आदरणीय क्या है? आदरणीय एक ही है ना बंदा आदरणीय, बाकी सब चोदू लोग हैं ना ये देश में। तो ओ ओ, अच्छा अच्छा। yeah, but I think what he did for Mahabalipuram was commendable because it made it more popular for sure. I also went there, by the way, to Mahabalipuram हम्म because no, I learned about it from the great one. हम्म But when I went there, I learned great thing कि महाबलीपुरम कैसा है कि चेन्नई के थोड़ा आगे है कोस्ट पे, ठीक है, एक डेढ़ हाँ। घंटे का रास्ता है कुछ। तो देयर इज अ नाइस कोस्टल रोड गोes ऑल अलोंग द कोस्ट फ्रॉम चेन्नई टू महाबलीपुरम। आई थिंक हम्म नॉर्थ में चेन्नई के। So there are हम्म। two parallel coastal roads right beside each other. ठीक है। हाँ। हाँ, तो कैसा है व्हाट? कि दो रियली? ऊपर। हाँ। सच में एकदम, अरे हाँ दिस इज मस्त है। क्रेजी। हाँ। हाँ मस्त है, गुलू गुलू के लिए भी अच्छा है। तो दो रास्ता है ऐसा, ठीक है। तो कैसा है कि एक रास्ता जाता है यहाँ तक, अच्छा है, फिर हम्म पूरा टूटा फूटा हुआ है। और हम्म। दूसरा रास्ता यहाँ से अच्छा है। तो ओके। मैं बोला ऐसा क्यों, ये ड्राइवर ने भी चेंज किया रास्ता। बोलते हैं हाँ। मोदी जी ये रूट फॉलो किए, तो जितना उसने फॉलो किया उतना ही रास्ता आ, बनाया, बाकी रास्ता अरे माचुद है। तो I hope he travels more, then we'll have better roads in the entire country. Prachi, hi Prachi, she's saying when will fresh violence happen in Ahmedabad? Prachi, ऐसा नहीं कहते, Ahmedabad has been dry since 2002, so let's keep it that way. But I know you're talking about the show. Show will happen after a few months now. Because my calendar has been planned. Ahmedabad not in it right now, but the first chance I get once I'm back from Auckland, I shall do it. Uh, Serbia. Okay, sorry. Sir, he's from Serbia. My bad, my bad. Djokovic is from Is it? I mean, again, सब इतना fake news है, I don't know what to believe anymore. You can Google it if you want, but he's from a Eastern European country and he follows वहाँ का medicine. That much I'm sure about. Uh, Views on Munawar jail to Big Boss mainstream. अरे ये तो जेमी तुम बताओगे, ये बताओ क्या अरे तुम्हारा दोस्त है वो। He's a ये- ex band member. अरे क्या बोले अभी? इट्स लेट्स मेरे को तो पब्लिक क्या क्या भेजता है कि अरे, मेरे को ही सब भेज देता है कि अरे इसने ऐसा किया, तू बता तेरे को कैसा लग रहा है, मतलब मैं क्या अभी ओपिनियन दूं भाई। अभी तो ही इन द स्ट्रेटोस्फियर नाउ, लाइक ही हाँ वन स्टेप अवे फ्रॉम बीइंग अ मूवी स्टार नाउ, ही इज दैट पॉपुलर नो। और जो जो करना पड़ता है पॉपुलैरिटी के लिए सब कर दिया भाई ने, तो यू हैव टू गिव इट टू हिम फॉर द एफर्ट। इज अ स्मार्ट चैप आल्सो ऑब्वियसली, यू नो। एंड एंड ऑल्सो दैट वन स्टेप दैट ही इज मिसिंग इज ऑफ कोर्स हिज हिम बीइंग मुस्लिम, और कुछ नहीं। नहीं, but then maybe that is part of the popularity, you know, like that community doesn't have as many people in popular culture that they can या look up to. So maybe that is part of the, because it gives him a platform to then jump into more mainstream. And a lot of people from all faiths follow him. या Maybe being Muslim has helped in that way from a numbers point of view purely, you know, या। because वो तो है ही। I remember after the band release, हाँ ऐसा when हाँ the band went live, हाँ। ठीक है, मेरे को मेरे को इंस्टा मेरे को इंस्टा पे बहुत लड़की लोग का मैसेज आया, ठीक Yeah, है। yeah, एंड आई वाज लाइक कि यही तो फेम है, yeah. दिस इज इट, आई हैव मेड इट This तेरी is जिंदगी this में। is a reflection, a faint reflection of the real fame that Bhai हाँ। has. तो अरे आगे तो सुनो, मैसेज आता है मेरे को, देन दे आर लाइक कि हे, तो आई वाज लाइक कि यो व्हाट्सअप, तो देन शी इज लाइक कि
भैया मुनावर भैया से बात करा दो, आई नो यू आर वेरी क्लोज। मैं Yeah, बोला यार yeah, ये, दिस yeah. इज आई देन रियलाइज हाउ आशीष आके मस्ट हैव फेल्ट। अरे तो ऐसे ही तो ग्रुप ही बनते हैं ना, ऐसे ही तो ऑन्टोराज बनता है, क्योंकि द मेन गाय कांट हैंडल ऑल द फेम एंड द पुसी बीइंग थ्रोन एट हिम, नो, क्योंकि उसका शिलाजीत खा के भी नहीं होगा, सो देन एनीवे दिस इज नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. Suhail Khan is here, our friend from Mumbai who gave me money last week for no reason. Uh, here from the rich state of West Bengal. He's paid me 200 Indian rupees. Do you think it's coincidence that Diwali 2.0 happened just before Netaji's birthday? Also, do you think to take inspiration from our country's leader about how to influence crowds? अरे 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 I don't know अभी कुछ है कि नहीं coincidence, because I think the bigger coincidence is कि 22nd का 26 इतना नजदीक आ गया, और 26 को हम क्या करेंगे, इतना सब लोग थक गए 22nd का नाच नाच के. But Richik, to answer your question, Netaji is such a tall character in history that no party can usurp him completely, and no party can also criticize him at all. And they often use Netaji against Gandhi, saying कि Netaji believed in action, Gandhi सिर्फ बात करते थे. But always the argument is that Netaji, of course, believed in Gandhiji himself. No, his three battalions were named after Nehru, Gandhi, and I think Maulana Azad, if I'm not mistaken. So will you take inspiration from our leader? कतई नहीं, because you know where the leader takes inspiration from, no, तो अपने को वो साइड पे नहीं जाने का है ना, because this is all Gobel speak, no, अपने को वो नहीं करना है. And lot of people who get into this game of becoming celebrities, influencer, or whatever you want to call them, lot of it, if not all, ends up becoming manipulation, क्योंकि आप ये करते जाओगे यूट्यूब वगैरह, तो यू गेट अ सेंस ऑफ व्हाट पीपल रिस्पॉन्ड टू, व्हाट वर्क, व्हाट डज नॉट वर्क, और फिर आप उसी पे खेलोगे, तो फिर यार आप छल कपट कर रहे हो ना. द पॉइंट ऑफ आर्ट एंड एक्सप्रेसिंग इट शुड बी टू बी योर सेल्फ, नो, बट पीपल आर जस्ट चेसिंग द मनी एंड द नंबर्स, नो. अगर यही करते रहे, फिर सब लोग को जाना पड़ेगा बिग बॉस में ना, तो ये तो नहीं कर सकते. बट थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, ऋतिक. आई hope to see you sometime this year when I come to the Far East once again. Sardan has sent 100 rupees. Sir, ideas on Modi planting time capsule 2K feet beneath that. अरे ये क्या नया आ गया है? This is science fiction. Great, great, great idea. I think it's amazing. It's a good plot for a sci-fi. uh, but 2K क्या है, by the way? I don't know the details of this, but दो it's हजार फीट बीनीथ टेम्पल। नहीं, feet नहीं है. The 2K feet beneath the temple. By the way, time capsules, for those of you who do not know, people send out these capsules into space also. Like, mostly it is just radio signals, so that if somebody in the future समझा। listens to us and they know that these people, they were crazy, but they like cheesecake, so. Ramnathan is asking, Assam government saying Raga to be arrested post Lok Sabha elections. हो क्या रहा है इन यात्रा 2 पॉइंट? अरे वो भी हिमंता का स्टेट में गया है ना, हिमंता एंटायर करियर इज बेस्ड ऑन हिम कर्सिंग राहुल गांधी. तो अभी वो पागल हो गया, उसको लग रहा है और क्या करूं मैं, इसको इसको डायरेक्ट मारूं कि क्या करूं, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है, शायद सब कुछ कर रहा है जो उसके हाथ में आया. बट आई थिंक फर्क नहीं पड़ता, अभी इस बार न्यूज वाले कवर करेंगे ही नहीं. द फर्स्ट यात्रा और राहुल गांधी दे कवर्ड इन नेगेटिव वे, बट डिड नॉट हेल्प, इट हेल्प हिम ओनली. सो आई थिंक नाउ द मैंडेट इज कि इसको दिखाओ ही मत इसको. तो पता नहीं भाई, ऑफलाइन गेम खेल रहा है ऑनलाइन दुनिया में. आई डोंट नो वेयर इट विल टेक हिम, बट आई स्टिल थिंक एटलीस्ट कोई एफर्ट ले रहा है ग्राउंड पे जाने की, दैट इज कमेंडेबल. व्हाट एल्स कैन वन से? 200 people still watching. Is that a good number, Jamie? I'm not sure. या I या don't. Yeah, it's good number. All right. या ग्रेट ग्रेट And नंबर्स almost as आया many था। likes also. That means you've done it, guys. You finally listened to Guruji. So, AB. one, हाँ. Surya is asking, do we have a Discord member for our this thing live members? तो उनके लिए मैं Who, बोलना चाहूंगा, who, we who is have a asking? नाम बताओ ठीक सूर्या से. सूर्या। Surya. Okay. Hi, यस। Surya. Yeah. तो सूर्या जी आपके लिए बोलना चाहेंगे, वी हैव अ सब रेडिट, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है, प्लीज ज्वाइन इट। विल शुड वी डू अ सब रेडिट रिव्यू आज की नेक्स्ट? आज तो समय काफी बीत गया है. आई थिंक विल डू इट नेक्स्ट टाइम. सो इफ हाँ बाय हाँ। दैट टाइम इफ यू गाइस हैव
Anything you would like to share in the subreddit fashion, please do it at that link. I don't know how this works. ये सब जिमी देखते रहते हैं, तो एक करेंगे एपिसोड जल्दी, मे बी नेक्स्ट टाइम ऑन द रेडिट. आई हैव सीन सम मीम्स दैट हैव बीन शेयर्ड ऑलरेडी व्हिच आर क्वाइट फनी, तो मे बी विल डू इट नेक्स्ट टाइम. For sure we'll do it. Zaid is asking, why don't you make a UPI ID and share it to cut this due to 30% cut bullshit? Akash Mehta does it very well. Zaid, are you replying to the pay as you like? तो बट देन द थिंग इज, सुपर चैट तो लोग अपने मन से देते हैं, अभी इसमें कहाँ हम यूपीआई आईडी देंगे. इट विल लुक लाइक आई एम सम लाइक नो some godman in a small town trying to make it. वो भी upcoming godman. Imagine the only thing worse than being godman is being upcoming godman. तो जो स्पेशल में क्या था ना, पे एज यू लाइक स्पेशल में तो क्या था, फॉर अब्रॉड इट हैड टू बी पेपाल, देयर नो अदर वे. For Indian people, I could have done UPI link directly, but it just seemed like the InstaMojo seemed more legit when you ask people. Otherwise, it looked like खुद के अकाउंट में पैसे ले रहा है. Just I don't know. There's nothing wrong with it per se, but it just felt like if there is a set platform in the middle, people get a confidence कि भाई ये इसका setup है, भाई professionally ही कर रहा है. ऐसे ही scam, and obviously people who follow my work enough to want to contribute will never feel that way. That's how I felt. But now with the second special coming up, I might do a UPI ID directly. Uh, करता हूँ मैं. आई थिंक इनफ पीपल हैव टोल्ड मी सो फार. एक बंदा तो शो पे आके बोलता है आपका यूपीआई, आई वांट टू गिव यू मनी, एंड दिस इज फेल्ट लाइक अ ड्रग डील हैपनिंग. आई अप्रिशिएट द सेंटिमेंट गाइस. क्या करें, ये दुनिया ही कैपिटलिस्ट है, तो हम क्या कर सकते हैं. आई अप्रिशिएट इट नॉनदलेस. प्रशांत कुमार इज सेइंग, अयोध्या में किस किस को देख के सरप्राइज. यार मैंने देखा ही नहीं ना, आई वाज आउट ऑल डे दैट डे, आई डिडंट फील लाइक वाचिंग द वीडियोस लेटर, क्योंकि जो भी था हाईलाइट आपको सुनाई देता ही है. बट आई नो ऑल द सेलिब्रिटीज वर देयर. अमिताभ बच्चन टीवी पे थे, नेक्स्ट दिन उनका प्लॉट का एड भी आ गया अयोध्या में. तो यार ये आदमी कभी हार मानेगा नहीं, जो बेचते ही जा रहा है, बेचते ही जा रहा है. Shweta is saying nothing wrong in UPI route. All right, thank you for the confidence. All right, she's saying I'll convince you face to face. Okay, पुणे में है शो अगले महीने, although आपने देख लिया ये वाला. Pune show is on 18th, by the way, guys. Now that you reminded me, might as well tell you. Hyderabad this weekend, then Bangalore on the first week of February, then Mumbai, one show online, then Pune show, and then that's it. Then Auckland. So also Melbourne possibly soon. So if you are down under, keep a lookout. I'll share that link very soon. Uh, Manish, I gave a deep, factual, insightful speech like you do on my company event. Claps were less, but in their eyes, it seems like a pinch their heart. अरे 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 यार कंपनी में ये सब नहीं करने का, पता, ये सब स्टंट मत करो भाई, पगार लो और बाहर निकलो वहां से. कंपनी में मत करो ये सब, ये बाहर करने का इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. Are there any more questions? Otherwise, we'll wrap up for the day. मेरे को वो पब्लिक पूछा था ना यूपीआई आईडी, तो आई थिंक योर स्टैंड अप स्पेशल का आईडी अभी भी चालू है, राइट? यूपीआई इंस्टा मोजो दिस थिंग. InstaMojo is there. If you, in fact, can you share those links here just in case? ठीक है, ठीक है. पेपाल इज आउटसाइड इंडिया, इंस्टामोजो इज फॉर हियर. मेरे स्पेशल के नीचे दोनों लिंक है, तो वहां से कॉपी करके आप भेज सकते हो. तब तक मैं पढ़ता हूँ एक सुपर चैट फ्रॉम YRAS. I don't know what that name is, but they sent $40 to ask, what do you think of lawyers? My opinion is that lawyers, just like politicians, are, I wouldn't say necessary, they are inevitable, because society is completely hypocrite. But we don't want to feel like we're hypocrites. So we outsource all our कलेश onto professionals. जो लोग कलेश करते हैं professionally, तो वो आपके behalf पे करते हैं. So I think if it were not for lawyers, as bad as they are, there would be violence like the olden days, no? कि जिसका लाठी उसका भैंस, no? So I think it's tedious, is very corrupt, but there is no other way. The other way is bloodshed, no? Which you don't want to go back there, no? अभी भी violence है country में, but then if you compare it, I think it is, I don't know actually, I can't comment on this. But what happens is that with news and with internet, no, the violence and conflict gets मैग्निफाइड, नो. अभी एक बच्चा अगर मर गया यूएस में, आपको यहाँ तक खबर आता है ना, पहले ऐसा नहीं होता था. तो देन लाइफ वाज सिंपलर मे बी बैक देन. बट लॉयर्स आर इनएविटेबल, नो, बिकॉज लोग झूठ ही बोलते हैं.
तो फिर देन यू गेट अ प्रोफेशनल लाई ऑन योर बिहाफ, and other guy gets another professional lie, and who lies better wins. No, what perfect system than this to define our culture. Are we still there? या ये क्या रिट्रैक्ट क्यों हो गया, क्या भेजा तुमने इसमें? अरे गलत लिंक भेज दिया था मैंने, तुमने तो क्या दिख गया ग्लू ग्लू था। लिंक भेजा है क्या इसके ऊपर? अरे ओके, एक हिंदी में आया है कमेंट, हम पढ़ने का ट्राई करेंगे। फ्रॉम बी अ फ्री सोल, हाय बी अ फ्री सोल। पुनीत भाई, महीने में कम से कम 2 वीडियो अपलोड करने का, भले ही 10-15 मिनट की हो वीडियो, तभी भी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। भाई बात तो आपका सही है एल्गोरिथम के हिसाब से, बट आप समझ रहे हो कि 10-15 मिनट कितना मुश्किल होता है लिखने का। अच्छा, अगर आपको स्पेशल बनाने का है, स्टैंडर्ड स्पेशल 1 घंटे का, उसको 1 साल लगता है। तो 15 मिनट 4 महीने का काम है सिर्फ लिखने का। उसके बाद उसको शूट करोगे, उसका खर्चा एडिटिंग करके हर महीने 2 क्राउड वर्क का ही निकल सकता है, और वो हम नहीं करते। वो अभी कुछ तो सोचना पड़ेगा, बिकॉज यू आर राइट, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर सब्सक्राइबर्स टू इंक्रीज। और आई डू सम अदर फॉर्मेट, वो पता नहीं आप लोग देखोगे कि नहीं, हम और कुछ, हमको और कुछ आता नहीं, हमको ना गाना आता है, ना हमको नाचना आता है, ना हमको झूठ बोलना आता है, तो फिर बचा क्या कर, सिर्फ यही बचा, सत्संग। तो यही कर रहे हैं हर हफ्ते, और आप लोग जुड़ भी रहे हो, बट विल इट बी इनफ, आई डोंट नो। डू आई लाइक डूइंग इट? यस, सो लेट्स कंटिन्यू। शालिक देशमुख सर, भिलाई कब आओगे? अरे 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 अरे, ये क्या पूछ लिया आपने? पहले हम रायपुर तो आए पहले, फिर भिलाई का सोचेंगे। मुश्किल है डूड, मुश्किल, यानी थोड़ा अभी आपको डाउट भी आता है आज का इंडिया में कि छोटा टाउन जाने का कि नहीं, यहाँ पे सब लोग बाहुबली बन के बैठे हैं। वैभव बूम बूम बोल रहा है, अरे विपुल का स्ट्रीम नहीं है ये। Sunny Ahir, if possible, would have been wonderful to read William Reed's comments on recent Indian history. Yes, Sunny, exactly. But then, if you really read that book, it's also very racist. But then, for a British guy of that time who traveled the whole world under the empire, of course, he was racist. Couldn't be any other way. Azhar Ali Khan, lawyers becoming content creators and sharing the scariest shit related to marriage and divorces. अरे ऐसा ये है क्या? ऐसा ऐसा होगा आई अरे थिंक चैनल। हाँ ये देखा नहीं क्या आपने, ये तो बहुत क्रेजी शिट है। हाँ हाँ हाँ, अरे क्या गांड फाड़ते हैं लोग, ऐसा स्ट्रीम दिखाते कि डू हाँ। यू नो कि आपका आप क्या बोलते हैं उसको, शादी करते, हाँ प्रीनप आप चाहिए तो साइन करा लो, फिर भी वो नहीं होता है क्योंकि लॉ के अंदर कंसीडर नहीं होता है। मैं बोला अरे शिट, यूएस अच्छा में आके तुम शादी करूँ क्या, ये सब अच्छा ऐसे क्या। तुमने वही पढ़ा क्या, ये वाला बात जो हाँ तुमने मुझे हाँ। कहा? अरे 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 अरे। और एक बहुत क्रेजी शिट आया हाँ, था कि हाँ। आप शादी करने से पहले बस अपने ससुर जी से एक ईमेल दे दो कि ससुर जी हमने आपसे कुछ भी दहेज नहीं लिया, एंड आस्क योर ससुर जी टू सेंड एन अप्रूवल ओवर दैट। मस्त अंगूठा मार के भेजेगा वो ऐसे। हाँ। आज ये एक आया थी, झारखंड हाई कोर्ट है शायद, जिसमें जज ने कहा है कि बहू को अलग घर की डिमांड नहीं करनी चाहिए, अपने कल्चर के अगेंस्ट है, और अगर बहू को उसकी सास या सास की सास को भी सेवा करनी पड़े तो इसमें बुराई क्या है? अब ये जज क्यों बोल रहा है ये सब? हाँ, ताऊजी है ना बोलने के लिए, घर पे सब लोग इतना खर्चा करके जज के पास जाते हैं, इतना टाइम बर्बाद होता है, फिर जज भी यही बोलता है सब। बट अगेन इन झारखंड अभी पता नहीं क्या बोलेंगे। पुष्कर वेलंकर, hi man. Puneet, I have ideas that could be explored. Could you be email? Sure. ईमेल क्या है अपना, जेमी बता दीजिए इनको, हमको बहुत वियर्ड ईमेल आते हैं कहाँ कहाँ से, आप भी एक भेज दीजिए। जेमी विल रीड इट फर्स्ट, एंड देन आई विल गेट अराउंड टू इट, यू कैन सेंड इट फॉर श्योर। इस चलता है comedy@gmail.com। चैट पे भेजा। चैट पे भेजा, ओके थैंक यू। वन क्वेश्चन वाज कि पटना कब, कौन पूछ रहा है? आशुतोष सिंह पूछ रहे हैं। डूड आई वुडेंट माइंड पटना, बट वहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजर मिलना चाहिए जो रेगुलर करता हो। ऑल्सो पटना इज एक्सपेंसिव टू गेट टू, बिकॉज डिस्टेंस होता है ना ईस्ट में बहुत। तो इफ आई कैन फिगर आउट द एक्सपेंसेस आई विल कम फॉर श्योर। मे बी आई कैन डू पटना एंड अगेन कोलकाता इज ऑल्सो फार, पता नहीं, आई विल फिगर समथिंग आउट, बट जेमी मे बी वी शुड लुक फॉर पटना इन द फ्यूचर। कोई है वहाँ पे ऑर्गेनाइजर? तुम ही हो हमारे टूर ऑपरेटर, तुम बताओ। अरे ये वर्ड मत यूज करो आप। टूर ऑपरेटर, तुम काम भी वही कर रहे हो, तुम सबका डेट मिक्सअप कर रहे हो, फिर क्या बोलेंगे? एक्सपीरियंस क्यूरेटर। एक्सपीरियंस क्यूरेटर, अरे लिंक्ड इन। अभिषेक कुमार सिंह या फेवरेट इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियन? अभिषेक एक तो नहीं है, काफी लोग अच्छा करते हैं, बट ऐसा कोई
no one that I'm really inspired by, as a because maybe it's too still too soon in India. We haven't seen like a body of work from somebody. Uh, for a couple of times I have been inspired really recently is Kanan special. I think it's really something to look up to and aspire to. Global special, like anybody anywhere in the English speaking world can look at it and it would make sense to them. So 2 hour special. If you haven't seen it, you can see it now. Kanan's special on his own YouTube channel. Besides that, I appreciate what people are doing in the small space of social relevance left in stand up. ऐसे बहुत लोग हैं नहीं, पर ग्रोवर करता है, डैनियल करता है और अजीम करता है. आई अप्रिशिएट दैट. ऑफ कोर्स आई फाइंड लॉट ऑफ द कॉमिक्स फनी, जस्ट दैट आई डोंट फाइंड देम amiable. Like I don't know what's the right word, but like I enjoy Delhi comedy also. I think it's funny. The attempt at humor is definitely funny. तो बहुत लोग ऐसा तो अच्छा अच्छा कॉमिक्स, बट नो वन फेवरेट टू आंसर योर क्वेश्चन. प्रतीक बोल रहे हैं, गुरु जी प्रणाम, नमस्कार. अगर आप अभी स्ट्रीम पे आए हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए. अगर आप पहले से देख रहे हो तो धन्यवाद जुड़े रहने के लिए. स्ट्रीम अब एंड ही होने वाला है, 1 घंटे के ऊपर आई थिंक ज़्यादा हो जाएगा. नहीं नहीं, टाइम है, टाइम है. वी ओनली डिड एट 45 टाइम है. मिनट्स कितना लोग हैं अभी हाँ तक? 200 लोग हैं अभी. हाँ चलो, हाँ, I think 215. let's end अरे, under 1 hour. Let's take the last few questions and then we हु will see you guys next week if all goes well. इज दीपिका नारायण भारद्वाज? ये कोई न्यूज़ में है कि अब चैट में किसी ने भेजा है? समवन इज सेइंग आई शुड फॉलो देम. तो अभी भाई गूगल करना पड़ेगा, फिर तो हम पता नहीं कौन है. मे बी आंटी सी आ रही मे बी सी ऑल्सो कंटेंट क्रिएटर्स. है. BK Chetri is here. Hi man. Current scenario of stand-up comedians are not just mediocre, but the comedians who are intelligent, learning towards right. Talking about India, maybe I think अभी ऐसा हो गया कि anybody who is conformist is right by default. No, because pendulum इतना swing हो गया है कि now if you are not speaking out, you are helping them in any case. तो plus market पैसा वहाँ पे, तो कोई क्यों नहीं करेगा ना. Dr. Khan is saying, Khan Umara is saying, judge ही वो ताऊजी होंगे. Yeah, but I wouldn't be surprised. Vulcan is saying, is this Vulcan from Star Trek? Is that the reference? सर, जब इंटरनेट इन्फ्लुएंसर्स की कमाल देखते हैं तो पढ़ाई लिखाई से विश्वास उठ जाता है. लगता है क्यों इतना पैसा वेस्ट करें. आई अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट, बट भाई नंबर की बात है ना. जो अगर 1000 चूतिया भी ऐसे हैं आपको जो दिख रहे हैं ऐसे ही कुछ भी घटिया कंटेंट बना के, उसके सामने लाखों करोड़ों ऐसे हैं जो ऐसे ही चूते हैं, वो लोग कंटेंट नहीं बना रहे और बेचारे अनएम्प्लॉयड बैठे हैं. लाखों ऐसे हैं जो जो इजराइल जाने के लिए तैयार है क्योंकि यहाँ पे काम नहीं मिल रहा. वहाँ पे मरना भी पड़े तो उनको चल जाएगा, एक बार कोई काम तो दे दे. तो डोंट गो बाय नंबर्स, डोंट गेट डिसहार्टेंड. शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती है, ये याद रखिएगा. What you enjoy beyond comedy, Nitish? Nitish, I enjoy reading and writing, and I'm doing neither of those things enough because logistics में हमारा बहुत time जाता है just to make stand-up happen for me and for other comics who we produce the shows for. तो reading and writing top of the list. I like traveling, but अभी after the point you feel कि traveling में भी ऐसा है कि you are trying to run away from somebody. If you're really at peace, you can be at peace in Kandivali also, So reading and writing, I think that covers everything. I would like to live a more balanced, more healthy life, पर हमारा क्या है, हम निशाचर प्राणी बन गए हैं. स्टैंड अप कर करके रात रात को शो होता है, नींद आती नहीं 3 बजे तक, क्या करें. तो वो आई वुड लाइक टू इम्प्रूव. सो इफ आई गेट द टाइम और द स्पेस, आई वुड डू दैट. नो, जस्ट द बैलेंस्ड लाइफ, बिकॉज आई ट्रूली बिलीव दैट इट हैज टू बी फिजिकल peace first. Mental peace will follow later. Abhishek Kumar is saying they made Ram face same as Buddha. They are trying to hijack Buddhism in some way. Abhishek, that I don't know. It's a very beautiful idol. Face, as far as face is concerned, do you know the Buddha ka face? Nobody knows how it looked because when Buddha was alive, he said no images of me to be made ever. Almost a few centuries, I think 500 years after Buddha, were the first idols of Buddha were made, and they were made in Afghanistan because the kingdom was there till Kandahar of the Buddhist kings at that time. And if you see the original Buddha images, no, they have a very distinctly European features because they were the artisans who made it. Because no, there was Greek influence in Afghanistan at that time. Then, as that image traveled further down south towards India, it came to Magad or say Mathura or around that area of today, like UP basically.
एंड वहां पे द फेस चेंज टू अ मोर राउंडर, मोर एशियन, मोर इंडियन फेस दैट वी आर मोर फेमिलियर विथ. तो ये सब में जाना नहीं चाहिए. आई थिंक दिस आर ऑल quirks ऑफ हिस्ट्री. Nobody knows what the man actually looked like, and always artists take inspiration from somebody else, and who had taken already some inspiration from someone beyond, before him. So I wouldn't get into all of that. सर बजट में फार्मर्स पे टैक्स लग सकता है. अरे ये तो हमको पता नहीं था. लग भी जाएगा तो क्या कर लेंगे बेचारे. कुछ बोलेंगे तो बोलेंगे ये लोग सब जिहादी हैं, खत्म हो गई बात, भरो टैक्स. Buddha is one of the avatars of Vishnu and Ram. Yeah, that has also happened in our history when the priests felt threatened by the new competitor religion in the market. They said कि कोई बात नहीं, बुरा थोड़ी है, अब अपना ही है भाई. हाँ हाँ, हमारा ये इसको भी लेके आओ यहाँ पे. ऐसा ना, if you cannot beat them, join them. That has also happened for sure in this country. uh, मनीष इज सेइंग शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती, पर वो भारी भरकम फीस जरूर पे करो तो आती है, और उसका इंटरेस्ट भी मंथली नहीं आता तब भरोसा उठ जाता है. मनीष, आई अंडरस्टैंड द पेन व्हेन इट कम्स टू education and what it has become in the India of today. But when I say shiksha, I meant true education. It may come from a school, it may come from a college, it may come from a life experience, it may come from the books you read by yourself, it may come from your own seeking. It did not come from NMIMS. तो इसी के साथ आज का सत्संग एंड करते हैं. ये आपने पर्सनल ले लिया। क्योंकि व्हेन आई पेड माय फीस, नो, एट दैट टाइम कम था, काफी कम था फीस, बट तभी मुझे लगा यार इतने लाखों में फीस कैसे होता था. आई वेंट टू ट्रस्ट स्कूल, लाइक अ पब्लिक स्कूल, एंड आई वेंट टू जेवियर्स एंड देयर वाज नो फीस एट ऑल. So when I finally paid a couple of lakhs at that time, I felt so guilty कि I never spent that much money on myself in one go ever in my life. So, but by the time I ended my batch, the fees had already jumped by 4 or 5 times. No, I thought चलो बच गया, निकल गया, सस्ते में कट गया, कोई बात नहीं, कट गया वो, सस्ते में कट गया. थॉट्स ऑन एनलाइटनमेंट योगेश, ये बहुत बड़ा टॉपिक आपने छेड़ दिया. मे बी नेक्स्ट टाइम. अभी हम जा रहे हैं, स्ट्रीम को 1 घंटे के ऊपर नहीं जाने दे सकते. ऐसा कोई रूल नहीं है, हम बस, हमको ऐसा लग रहा है कि लंबा हो जाएगा. ऑडियंस जुड़ी हुई अभी तक, अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, CFBR लिखिए. हम मिलेंगे अगले हफ्ते. Jesse is saying, do you think Buddha really achieved enlightenment? Why don't we have another Buddha now? We have had quite a few, but if you just go back to the beginning of the stream, what Osho says is that people are not violent, are not part of history. So maybe they came and they left without us noticing, because they did not fight elections. AI जनरेटेड जॉर्ज कार्लिन स्पेशल बाय, नहीं मैं नहीं देखूंगा ये सब. मुझे नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी. बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर कमिंग. हैदराबाद shows this weekend, please do come if you're in Hyderabad. 2 different shows, Friday and Saturday. लिंक है in the description, है लिंक. हाँ हाँ हाँ. Yeah. Okay, all right. We'll talk about AI maybe next time. If you're here, AK Bodhi, do remind me. We'll take it up from there. All of you guys, thank you for being part of this. If I have missed anything, please remind me next time. We'll try our best to make it up to you. And that's it. Wish Jamie best of luck for his work-life balance, which is never going to happen, but you should try. Please don't have cheesecake. If you do, go to the gym afterwards. Bye bye. Good night.